ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो इंशाल्लाह आगे वो भी सारे स्पेस है यहाँ पे सीबीटी। फिर ये हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। सो बेसिकली बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड दिस वुमेन को कि उन्होंने बहुत अच्छा मैम ने बड़ा अच्छा बोला कि फ्रॉम 9 Focus on women. इट मींस कि वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, वी आर नॉट गिविंग ओनली दिस academic 9th if we are making this big one ये 100% गर्ल्स ही है ना सर? ये फैकल्टी विल बी आल्सो दे हैव जो उनके ऑर्डरली भी होगी वो सिक्योरिटी दे विल बहुत अच्छा है ये, बहुत बिल्कुल बिल्कुल वही it is different from others, so you will see in the long run, sir, it is totally different. they said that there will be no male member in this In this package. male into this. अच्छा सर कांसेप्ट अच्छा है अच्छा है, बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने चलाना है इसका एक्सपीरियंस तो होगा। माशाल्लाह सर, आपके सामने मैम माशाल्लाह वेल मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम गर्ल्स हाई स्कूल स्कूल नागा, तो मैं रिसेंटली वहां से रिटायर हो गई, तो हमने अपने यहाँ पे नॉर्मली यहाँ टीचिंग फैकल्टी बाहर से आती है? नहीं सर हाँ, लोकल नहीं ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं बाहर की बाहर से उधर सर आते हैं। ज्यादातर मेरे बाहर को की, सर 50% बाहर से और बाकी यहाँ का। काफी हाईली पेड बहुत बिहार वगैरह से ज्यादा हाई। हमारे उधर भी है ना कोचिंग क्लासेस में, खास करके जो साइंस के सब्जेक्ट, मैथ्स नॉर्मली जो है लोकल पढ़ाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना बाहर से आते हैं। काफी अच्छा है। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स को, इंस्टीट्यूट अच्छी चले, अपने जो पर्पज जिस पर्पज के हिसाब से बनाए। क्लासेस
Came together as a program, coming together as a success. The most awaited occasion is finally here. I'm delighted to open a hearty welcome to all of you gathered here. And I'm Snowball, welcoming you all with the best Islamic greetings. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. We are honored to host today's beautiful event. We are heartily welcome to all, and especially our guest of honor, Shri P.K. Bulli Sir, Divisional Commissioner, to inaugurate the function of KGI, Kashmiri Girls Institute. Indeed, the proud moment for all of us. The mission of Kashmir is to serve society through excellence in education. Female education is being appreciated differently, and this is a step towards women empowerment. An educated mother can create an educated nation. I would like to invite Madam Nusha Jan for welcome note. When you are requested to hold the dice, please. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Divisional Commissioner Kashmir, Janab P.K. Police Sahab, distinguished guests, representatives of electron and print media, ladies and gentlemen, and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah and good afternoon. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग उसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दिल A warm welcome to the dignitaries and audience for taking time out to grace this occasion. This new idea of having an institution exclusive for girls is in consonance to the idea of education from women to women, by the women, as we feel it a necessity in future. We have a highly motivated professional workforce to execute this concept and with your support and collaboration, this will be the most successful initiative, sir. We welcome you all. खुशाहीन है परवाज है काम तेरा खुशाहीन है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमान और भी है I I once again thank you all for joining us today. Thank you so much, ma'am. A word hearty welcome is the sweetest of all things in the life. A smile that radiant love to the all people around makes everyone happy. So I may request Madam Fatima Shaheen, Principal of IMI on the stage. Ma'am, the stage is yours.
Assalamu alaikum to everyone and a very good evening to everyone. I feel privileged to addressing this brilliant audience in the august presence of the Honorable Divisional Commissioner, Kashmir, Mr. Pandurang K. Poli Saab, Worthy Director, School Education, Kashmir, Shah Sahab, Farooq Shah Sahab, uh, and additional GC Srinagar. Uh, sorry. And my respectable senior and celebrated administrator, Farooq Ahmad Shah Sahab. It is a great honor indeed to speak for the cause of girls' education, a mission that I have been trying to propel forward and companion during more than 30 years of my service in the education department, first as an educator, then as a principal, and finally as a chief education officer, Bandam. It has been rightly said that by educating a boy, we educate one person, but by education a girl, we educate the whole family. Female literacy is one of the most important barometers of success and prosperity in the today's society. Sir, in this information revelation age, when the knowledge acquiring and it is dissemination is click aware because of Google and server service, certain initiatives and methodologies are still relevant and will become more relevant and mandatory in the fast changing socio-academic dynamics. World is just starting of women empowerment and girl education as a basic right. But we have to admit that certain incidents and happenings which we are rarely witness about the safety, security and job-free spaces for our gender have become routine now. We as parents think 100 times before admitting our what specifically of our gender to school academic institutions and tuition facilities. Rather, some incidents and occurrences have made parents to discontinue the education for their specific gender children, which is very unfortunate and disappointing in this era. Kashmir, although has been keeping its tradition alive and to sustain such values and create gender-specific spaces, we at this institution have come up with this novel idea of imparting academic and holistic education to the girls and have tried to get the best of the faculty and facility available for, uh, for availability for catering to the contemporary needs and requirements of our people. Women have proven themselves in every field which we are once insulated for them. We are saying women as world leaders who not only have contributed for global strategic policies but successful implementation as well to benefit overall human sustainability. Air Force to Navy are territorial warfare. We have women warriors in the forefront, globally top scientists in the field of medicine, physics, or chemistry. We see women. Just think of any daring and dangerous field. Women are everywhere. So this initiative by Women for Women is indeed a futuristic vision which need to be supported.
I am sure soon we will have a chain of this kind of academic facility all over the valley as it is different and first of its kind. We expect your support and guidance to steer us for making this concept a success for our community that we contribute for the mission of Beti Padhao, Beti Bachao. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, ma'am. Now I request Mr. Habibullah Sahab from KGI to present bouquets to our guest. आगे आगे कंटिन्यू और जिस इल्म की तासीर से जान होती है नाज़िल, जिस इल्म की तासीर से जान होती है नाज़िल, कहते हैं उस इल्म को अरबाब नज़र मौत. A woman is a full circle because it possesses the power to create, to nurture, and to transform. It is a woman who needs little nudge to change. Let me introduce the most dignified personality directed education, Mr. Mahmood Saab on the dais, please. Thank you for giving me an opportunity to convey my good wishes for this noble endeavor. Chief guest of the occasion, Janab Dibram Sahab, Farooq Sahab, our former Secretary Education and Secretary Tourism, Ani Balki Sahab और यहाँ बैठे हुए students and teacher faculty. I feel honored and privileged to be a part of this very noble endeavor. Usually, we keep on attending such functions, but this is one of its kind initiative, and which is very focused on the girl education and girl empowerment. It goes a long way towards the objectives set in our new education policy. You all are aware that new education policy has been unveiled, and we in coming years are going to implement it. Unfortunately, we are confronted with many problems, like Jammu Kashmir has, as compared to the national averages, the literacy levels are low. Contrary to that, we have a very high teacher to pupil ratio. So these contradictions need to be resolved, and efforts like this need to be supplemented so that this place becomes a hub of education. From the industry's perspective, I would just briefly sum it out that education comes under the ambit of service sector, where incentivization to such initiatives can flow. Last year, the government brought in new central sector scheme, which promises incentives to the education sector. को किसी को भी अगर educational institution बनाना है, उसमें they have to follow certain steps. First and foremost, government ने last year a policy like change of land use. So first and foremost, the person or the proprietor has to apply for change of land use. उसके बाद change of land use में एक time bound manner में हर डिप्टी कमिश्नर को ये authority दी गई है कि उस केस को dispose of करे. उसके बाद then there is a permission, and after that the unit has to come up and they have to apply through, there's a portal called singapore.jk.gov.in. तो उस पोर्टल पे अप्लाई करके वो जो है इंसेंटिव के हकदार बनते हैं. और इंसेंटिव जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, वेर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई जो है 400% है. तो अगर किसी का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, he is entitled or he or she is entitled to take that 400 crores back. So this is the beauty of that policy. अगर हम
जो आज की डेट में पॉलिसीज अवेलेबल है और जो कानूनों को इजी बनाया गया है, जैसे चेंज ऑफ लैंड यूज है, तो इन दायरों में रह के एजुकेशन सेक्टर कैन फ्लरिश। अभी लास्ट ईयर हमने जब पोर्टल खोला इंडस्ट्रीज में, वी वांटेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो वी वर हैप्पी टू अनाउंस दैट आज के डेट में 4,500 एप्लीकेशन हमारे पास आई है। इतनी एप्लीकेशन है कि जितना हमारे पास जमीन नहीं है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ड्यूकम साहब का, वी आर ग्रेजुअली ऑगमेंटिंग दिस लैंड बैंक। और हमारे पास हॉस्पिटल्स के एप्लीकेशन जब आए तो 3 एरियाज को हमने गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज मेडिस्ट्री। तो हमारा सेम्पोरा का मेडिस्ट्री है, बिमना का मेडिस्ट्री है, प्लेस फॉर लेलहार इन पुलवामा, जिसको मेडिस्ट्री का दर्जा दिया गया। लेकिन जहां पे हॉस्पिटल्स हम जो है कमिंग डेज में कोई 6,000 बेड का बोल रहे हैं कि 6,000 बेड्स और 1,000 एक मेडिकल सीट्स आएंगी, वही एजुकेशन सेक्टर में अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल आया नहीं है। तो मेरी इस्तदा प्रॉपराइटर से होगी, जो लोग चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना, आज के डेट में इन पॉलिसीज का फायदा उठाए और अपनी एप्लीकेशन, अपने डीपीआर सिंगल विंडो पे अपलोड करें, ताकि हम एक डेडिकेटेड हब है जो एजुसिटी है, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है या हमारे कंट्री में है, एरियाज लाइक कोटा है, फिर हमारे चेन्नई डाउन साउथ, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो एजुकेशन के हब बने हैं। तो इस बात में ये जो है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि कश्मीर भी एक एजुकेशन हब बन के उभर सकता है, प्रोवाइडेड आज के डेट में सारे जो है द पॉलिसीज आर फेवरेबल। खाली एंटरप्रेन्योर्स को जो है ये चीजें अवेल करने की जरूरत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। शुक्रिया। Thank you so much, sir. Education should be such which would bring the human being towards life action. Development of individuality should be the objective of the education. Let me introduce the most dignified and charismatic personality, Divisional Commissioner Kashmir Shri P.K. Kohli sir, to hold the dais and grace the occasion. वैली का या श्रीनगर का जो कोटा कहते हैं, मरेपुरा हैदरपुरा के इस एरिया में जो एक्सक्लूसिव गर्ल्स इंस्टीट्यूट ओपन की है, जिसमें 9th से लेकर के सभी प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग यहाँ की जाएगी, इंक्लूडिंग आने वाले सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। इसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो बुलाया, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का इन्विटेशन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पहले इंस्टीट्यूट्स के जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे लफ्जों में बताया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए जो लिटरेसी रेट जिस पर डायरेक्टर साहब ने रोशनी डाली, जो कम है, बढ़ाने की जरूरत है, मुझे लगता है इस इंस्टीट्यूट्स का उसमें काफी अहम रोल रहेगा। आज का जो जमाना है वो कंपटीशन का जमाना है। कोई भी फादर, पिताजी या मदर, हर कोई चाहता है कि अपने लड़कों ने पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ने के लिए जो भी मदद लगती है वो हर सब मदद जो है वो करते हैं। खास करके यहाँ वैली में एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ गर्ल्स को काफी पढ़ाते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, वहां भी देखता हूँ रूरल एरियाज में नॉर्मली गर्ल्स की पढ़ाई जो है 8वीं 10वीं के बाद होती है, लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक इवन गरीब से गरीब घर की भी लड़की पढ़ती है। गर्ल्स वुमन होने के चलते कुछ डिफिकल्टीज रहती है, और वही डिफिकल्टीज को मद्देनजर रख करके मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए बनाई गई है।
पीरबाग, हैदरपुरा इस एरिया में काफी कोचिंग क्लासेस रहते हैं और हमारे जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनको भी कहीं कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है जब ये एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट शुरू हो गई तो उन मुश्किलों का भी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। पुलिस में एक कंसेप्ट आई है वन स्टॉप सेंटर, गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए वन स्टॉप सेंटर खोला गया है बहुत सारे पुलिस स्टेशन में या हमारे कहीं मेन इदारों के प्रमाइसेस में। उसका मकसद ये है कि वुमेन्स रिलेटेड जितनी भी ग्रीवेंसेस है, चाहे डोमेस्टिक इश्यूज है, कहीं सेफ्टी के इश्यूज है, कहीं उनके दूसरे रिलेटेड इश्यूज है, वो सब इश्यूज देखने के लिए काउंसलिंग के इश्यूज है, उससे लेकर एक वन स्टॉप सेंटर खोला गया है। मुझे लगता है इस जो इंस्टीट्यूट है उसको भी हम वन स्टॉप सेंटर फॉर गर्ल्स कर सकते हैं। जहाँ आपने इरादा रखा है कि अभी तो नीट या जेडब्ल्यू से शुरू कर रहे हैं लेकिन आगे अलग अलग फील्ड में भी ले जाना है, ये जो आपका इरादा है वो इरादा डेफिनेटली फुलफिल हो। मैं बेस्ट विशेष कन्वे करता हूँ और रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। Now I may request Mr. Habibullah Sahab from KGI to present the monumentals to our guests. इसी पे आइए सर। सर जिस कश्मीरी गैदरिंग में कश्मीरी कल्चरल रोक ना हो तो वो प्रोग्राम ही क्या, इसलिए इस प्रोग्राम को हम अधूरा नहीं रहने देंगे। आई वुड लाइक टू कॉल कश्मीरी कल्चरल ग्रुप फॉर द डांस।
नवबारक शान पैदा कर अगर बस नाम हस्ती गुलाम मंजूरा जीरो बिगड़ कर भाव कर गगया तूफान
Wow, what a mesmerizing performance. We could use a lot of claps for them once again. So this is for each and everyone who's present. तो अपनी खूबियां ढूंढ खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना तो अपनी खूबियां ढूंढ खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना अगर रखना है कदम तो आगे रख पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना सपने देखने हैं तो ऊंची देख नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला जलने के लिए लोग हैं ना प्यार करना है तो खुद से कर नफरत करने के लिए है ना तो अपनी अलग पहचान बना भीड़ में चलने के लिए लोग है ना तो कुछ करके दिखा दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग है ना So I would like to call Ms. Luna Haras on the stage from KGF for the vote of thanks. Assalamualaikum everyone. On behalf of Kashmir Girls, I'm happy to extend my vote of thanks to our chief guest,